And congratulations for the YouTube thing. All thanks to Priya. She made it possible. Thank you to Poonam, you you're the also. co-host. I made you the co-host. Thank you, ma'am, so much. Yeah. So we continue doing the beautiful chapter where we had left yesterday, which is the golden thread of gratitude. And basically, when we talk about the golden thread of gratitude, this is a thread which is of gratitude, which has been coming since multiple number of years. Can we please mute ourselves? So this is the golden thread of gratitude. One second. Actually, this thing, YouTube thing has been manifested by many. हाँ जी. YouTube जो है मैं सभी ने जोर लगा के मैनिफेस्ट किया है इसको मैम. हाँ मुझे भी Many लग रहा of them है. wanted. हाँ ये सबने ही मैनिफेस्ट किया है. कल मेरे पास Yes, सुबह ma'am, किसी का सबने मैसेज manifest आया था किया. तो वो यही बोल रहे थे कि YouTube के लिए. तो मैंने कहा कि कहते कि why don't you share. मैंने कहा why don't you manifest. So this was only They have yesterday, and after 2 manifested hours this thing magnificently. came that see I manifested so fast. मैंने कहा this is what we don't Yes. realize, that we can really actually bring Yes, around ma'am. things. Yeah, Thank so you. that's Thank really you, great. ma'am. So we are studying about the golden thread of gratitude. That means that since ages, we've had this practice of gratitude into the system. बहुत पुराने वाले जो ग्रंथ थे, तब से लेके अभी तक modern age तक people have been using gratitude, and since then it has never stopped. The link has been there constant from then till now, and it is passing on. All of us here, we will pass it on to our generations, the next generations, and so forth. So this is a constant practice that has been there. So let's read about it. Anyone who wants to read? Ma'am, can I? Yeah, sure. Thank you, ma'am. The golden thread of gratitude, dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all ma'am, can you please scroll down? Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Leonardo said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, thank you, before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawine, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. When you arrive in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Shumeshe, 1768-1813, Shawine Native American leader. History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther Jr. King, the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements,
He spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. It is any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein. Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton recently voted the greatest contributor to the science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude's power is unknown to most people today because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. Yeah, so this is this beautiful topic, which is the golden thread of gratitude that is from times immemorable, as long as we can actually think of. We've had this practice of gratitude, which was penned down in the scriptures. और इसमें बहुत सारे different scriptures के quotes भी बताए हैं which were related to gratitude, and it says the power of gratitude was preached in practice, and then it's been passing on from one generation to the other, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. You name a religion and it has spoken about gratitude. You know, like all the major religions are quoted here: Christianity, Islam. Of course, we've read about Gospel, the Matthew, saying that whosoever has gratitude will be given more, and whosoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. You know, then Quran ka kal humne quote padha tha, that we have given man the way, and whether he, you know, like if he practices gratitude, he will get more. If he doesn't practice gratitude, verily my punishment will be indeed severe. You know, so that was from Quran. Of course, now today we are going to study a few more quotes that are mentioned from these religions, from Judaism, Buddhism, Sikhism, Hinduism. They've all talked about Shukrana, about saying thank you, about the power of gratitude, right? So we have a few more quotes here. So Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. You know, so you know that what is insurance. So अगर हमको अपने लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ लीड करने की इंश्योरेंस अगर चाहिए, तो उसके लिए हमको शुक्राने में रहना पड़ेगा. ठीक है. फिर बुद्धा ने ये बोला है that there is no cause, like human beings, if they have come on this earth, there is no cause for anything but gratitude and joy. You know, सिर्फ दो चीजें हैं हमको प्रैक्टिस करनी है, अपने आप बाकी की सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी. Of course, then Lao Tzu said that अगर आप जो भी अभी आपके पास है, अगर आप उसको थैंक यू बोलते हो, जो भी है, हमारी हेल्थ है, वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, वी हैव फैमिलीज, वी हैव पेरेंट्स, वी हैव our body, we have beautiful eyes through which we see the world, we have money, we have food on our table every day. So बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे पास है, luxuries है हमारे घर में, you know, we all have vehicles, you know, using which we go from place A to B. But I don't know how much depth of gratitude did we even have for these things. So इसीलिए if we rejoice in the way things are right now, the whole world will belong to you. You know, तो अगर पूरी दुनिया के का जॉय, पूरी दुनिया में से अच्छाइयाँ, पूरी दुनिया के लग्जरीज, यू नो, बेस्ट ऑफ हेल्थ, अगर हमको जो भी इंजॉय करनी है, उसके लिए हमको जो अभी हमारे पास है उसके लिए थैंक यू बोलना होगा. दैट्स व्हाट इट सेज. Krishna says that whatever he is offered, he accepts with joy. Okay, so मतलब इतने सारे गीता में भी बहुत सारे इनके वो है कि किस तरह से हर चीज के लिए थैंक यू बोलना बहुत जरूरी होता है, और जो आपके पास है एक्सेप्ट विद जॉय. ओके, इट माइट नॉट बी समथिंग यू लाइक समटाइम्स, जो हमारे लाइफ में अभी आता है, हो सकता है कि वो हमारी लाइकिंग की चीज नहीं हो, लेकिन फिर भी हमको थैंक यू बोलना है. एनीथिंग दैट यू एक्सेप्ट, जो बोलते थे ना, ये मुझे तुलसी का पत्ता भी दे दो तो मैं उसमें भी खुश हूँ, मेरे लिए 56 भोग लगाने की जरूरत नहीं है. तो वो मतलब उस तरह के हार्ट के साथ, that you know, always say that yes, it's enough, I'm enough, and everything is perfect in my life. Okay, and be very, very grateful that smallest thing that happens in our life.
Then King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and earth. So King David, again, this is a quote from Bible that says that, human beings का काम यही है कि heaven और earth के बीच में जो जो चीजें हैं उसके लिए बस thank you बोलो. सोचो, और कोई काम ही नहीं है हमारा. अगर ये काम कर लिया, अपने आप सारे काम बन जाएंगे. That's what he means. And Jesus said thank you before he performed each miracle. So we all know that Jesus came on this earth as a savior of the humankind. कहते हैं ना, जब कलयुग आने वाला होता है या चल रहा होता है तो कोई भगवान का रूप लेके धरती पे आता है. ठीक है, तो ऐसे लोग आते हैं जिनमें ये पावर होती है कि वो लोगों को चेंज कर दे. तो वो बहुत मिरेकल्स करते थे जीसस क्राइस्ट. अगर कोई बहुत सिक पर्सन होता था तो उसको ठीक करते थे. सो ऑल दैट ही डिड, ही सेड थैंक यू बिफोर ही परफॉर्म देम. राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न. हम भी अपनी मेक माय विशेस कम ट्रू, जो हमारा 13 चैप्टर आएगा, उसमें हम अपनी विशेस के लिए पहले से थैंक यू बोलते हैं. राइट, कि थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज दैट आई एम मूविंग टू माय ब्यूटीफुल न्यू हाउस. Thank you for the great news that I've got like my perfect job and I'm really enjoying it, and like all that, as if it's already done. मतलब हम पहले से ही thank you बोल देते हैं. So that's Jesus who always did that before he performed any miracle on people. So that way, इसमें जितने भी religions हैं, जो भी cultures हैं, जो भी tribes हैं, they all did thank you before that happened. हमने देखा है ना कैसे रेन डांस क्या होते हैं. Before the rain comes, already celebrating the advent of rains. मतलब अगर कहीं पे बारिश नहीं हो रही होती है and there is drought and there is dryness, the crops are not flourishing, तो वो पहले से ही celebrate कर लेते हैं कि रेन के बाद नाइल रिवर के फिलिंग के लिए इतना ज्यादा सेलिब्रेशंस करते थे. सो इस तरह से पहले से ही हम सेलिब्रेट कर ले, पहले से ही अपना विश फुलफिल में रहें. एंड दैट इज व्हाट इज द ट्रू एसेंस, एंड सेइंग थैंक यू बिफोर समथिंग कम्स. So it says the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. Okay, so this is a beautiful quote which is by Tecumseh that says that when you arise in the morning, give thanks for the morning light. So we have always taken it for granted. We all know that the sun rises in the morning और सुबह रोशनी होती है, like इस वक्त बहुत beautiful सी light है. So when you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life, that you're alive. There are so many people, who sleep in the night and they don't wake up in the morning. Okay, so you have life and you have a beautiful life at it, and a life that now you know how to design yourself, right? I mean, we have learned that. Isn't it such a beautiful discovery? I mean, all of us didn't know about it till now. We were suffering in our own way. We were thinking that kash aisa hota. I hope it worked out like that. I hope I had this kind of a life. I hope, like my health becomes so beautiful. We were all living in that hope, right? We did not know how to create it. We did not know how simple it was. And that is a new thing, a new beautiful kind of a life that we have discovered for ourselves because of these beautiful books. So it's very important for us to give thanks for our own life and for our strength, that we can get up, we can see, we can move around easily, and then give thanks for your food and the joy of living. Food, of course, to all those people who cultivate the food, the farmers, people who are transporters, people who are retailers, and then finally people who cook food in the house. So it's kind of a 4-step process. Okay, when we say thank you to the food, it has to begin from the farms, from the fields where the farmers have grown the crops. उनके लिए थैंक यू. उन्होंने इतना अच्छे से उसको, जब तक बड़ा नहीं हो गया उनके सारे क्रॉप, सारे वीट एंड राइस और जो भी वो ग्रो कर रहे हैं वेजिटेबल्स, उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर्स डाले, पानी डाला, उनको ग्रो किया. ठीक है, उसके बाद उनको काटा और उनको एक जगह स्टोर किया. फिर सारे वो लोग जो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व थे, जो कलेक्ट करके उसको होलसेल मार्केट में लेके आते हैं, टू ऑल द ट्रांसपोर्टर्स, देन ऑल दोज पीपल जो अनलोड करते हैं, अगेन होलसेल मार्केट से वो रिटेल मार्केट में आता है जहां से हम खरीदते हैं, एंड देन फाइनली इट कम्स टू आवर हाउस फॉर समवन्स कुकिंग. At times we cook ourselves, at times we have helpers who cook. So it's when we say to the food thank you, it has to follow that chain of saying thank you. मतलब बिल्कुल जो farmers के से start होती है वो पूरी chain हमको follow करनी पड़ेगी, और फिर finally वो food हमारी plate पर है और हमारी body को जाके nourish कर रहा है और इतनी beautiful health हमको देता है
है ना? This is what we need to do. So it says that if you say no reason of giving thanks, the fault lies with yourself. So this basically means that अगर आपको कोई reason ही नहीं मिल रहा है कि क्यों मैं thank you बोलूं, कई बार ऐसे होता है ना, कई बार हम thankless शायद पहले होते थे ऐसे. So if you see no reason for giving thanks, इसका मतलब प्रॉब्लम हम में. हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, इतनी फ्री की एयर है that we just breathe and we live every moment. We have never said thank you to the air. Until this book came into our life, मेरे ख्याल से हमने अपनी सांसों के लिए कभी थैंक यू बोला नहीं था, और जो बाहर इतनी सारी हवा है उसके लिए नहीं बोला था. हमने प्लैनेट्स को थैंक यू नहीं बोला था. हम हमेशा एस्ट्रोलॉजी दिखाते रहे, चार्ट्स, और हमने अपने चार्ट्स को बोला ऐसा है, सक्सेस नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. बट हमने कभी एस्ट्रोलॉजी, सारे जो प्लैनेट्स हैं जिनके कारण हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स बनते हैं, वी नेवर सेड थैंक यू टू देम. ओके, वी वर ऑलवेज ब्लेमिंग देम दैट मेरी सक्सेस इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज मेरा ये कमजोर है, मेरे वीनस में ये प्रॉब्लम है, मेरा जुपिटर बहुत स्ट्रांग है इसके कारण ऐसा हो रहा है, या मेरे सैटर्न नहीं चल रहा है. सो like that is how we have been all our life in the blame game. तो अब हम उनको थैंक यू बोल. पूनम, can you please see? I mean, like there's some noise there. So Yes, ma'am, I'm constantly on it. I think पता नहीं कैसे बार बार वही मेरा भी बीच बीच में लिंक इसलिए टूट रहा है क्योंकि No, no, ma'am, भी I'm constantly on it. Thank you, ma'am. So, so we really have to kind of see that, there are multiple things around us, if it's not even about our life, अगर हम सिर्फ एक बार अपने balcony में, अपने garden में, park में खड़े होके देखें, and then let's start picking up the things कि किन किन चीजों को उस park में खड़े होके we can say thank you. Or if you're by the sea or you're standing in your balcony, see what all things can you be grateful for. Can you see the expanse of space around? Thank you for that. The moment you have said thank you to the space, you have activated the space element in your life from where opportunities and success and victories come. If you say thank you to the element of space, you will see the opportunities and success and victories come into our life. Okay, it's one of the elements, 5 elements का एक element space होता है. To which we also call ether. फिर उसके बाद अगर आपको वाटर बॉडी कहीं पे दिख रही है या पानी दिख रहा है, उसको थैंक यू बोलना. And water, of course, is all around us. Air always has the moisture. Okay, so air is always containing some amount of moisture. It's never 100% dry air. So there's always a moisture content in the air again. So उसको थैंक यू बोलना हमें air, water के लिए. The air that we're breathing, usko thank you bolna. Matlab, these are all things which are there in abundance. We don't have to carry an oxygen cylinder and breathe through the cylinder. इतने सारे लोग होते हैं ना जिनको पंप्स लगा के ब्रीथ करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई लोग हैं जो आराम से ब्रीथ कर पाते हैं. तो जब हम एयर को, वाटर को, स्पेस को थैंक यू बोलेंगे, मदर अर्थ को थैंक यू बोलेंगे. ट्रीज, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? पेड़ पौधों से आती है ना. सो ऑक्सीजन वहां से निकल रही है और वो इतने ब्यूटीफुल है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और हमको ऑक्सीजन देते हैं. सो जब हम पांचों एलिमेंट्स को थैंक यू बोलेंगे तभी तो हमारी हेल्थ में सुधार आएगा, बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. वी आर ब्रीदिंग द सेम एयर दैट वी आर सेइंग थैंक यू टू. We are also taking care of, thanking the space and the fire. Fire element is the light and the sun, like fire element को जब हम thank you बोलते हैं तो that means जो plants में of course light की वजह से, sunlight की वजह से ही तो photosynthesis होती है. तो अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है, पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर हम उसको बैड एयर बोलते हैं, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड इज समथिंग दैट वी डोंट वांट टू कंज्यूम, वी वांट टू एक्सेल, राइट. सो वो एक्सेल हम करते हैं, वो एब्जॉर्ब करके उसको प्यूरिफाई करके हमको ऑक्सीजन देते हैं. एंड इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. The food, the green color happens in the presence of sunlight. So the fire element is equally important. So all the 5 elements we have to dil se feel thank you for, and that is when it is going to give us the perfect health, right? So इसीलिए हमको चीजें ढूंढनी है कि इतनी सारी, अभी तो हम अपनी बॉडी पे आए भी नहीं है, अभी तो हमने अपने लाइफ के बारे में सोचा भी नहीं है. ये जो हमको फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर मिले हुए हैं, इनको थैंक यू बोलने में ही आई थिंक वी कैन कंज्यूम द होल डे, बिकॉज दे आर सो मच, right? So then it talks about when we are talking about the golden thread of gratitude, that means that all those great people who have made multitude of achievements in their life, वो सब thank you बोल के आगे बढ़े. मतलब उनकी सीढ़ियां ये होती थी
हमने पढ़ा था ना that thank you और gratitude is the bridge from where you are now to where you want to go. So वो जो bridge होती है वो gratitude की बनी होनी चाहिए, ठीक है, जो जहां पे भी हम अभी हैं और जहां पे हमको जाना है. सो उन्होंने कुछ नाम दिए हैं रोंडा बर्न ने यहाँ पे. गांधी, दैट्स महात्मा गांधी. मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, Dalai Lama, Leonardo Da Vinci, Plato, Shakespeare, and all these wonderful people who have actually achieved such monumental things in their life, you know, so much success. They have been the aces in their own field. Okay. And this has been, you know, this has been with gratitude that they have done. So मतलब वो पुराने जमाने से लेके ये लोग पिछले 100 years के सारे लोग हैं, ये भी थैंक यू बोल के ही आगे बढ़े थे. एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताया है कि वो रोज 100+ थैंक यू बोलते थे, एंड दिस वाज हिज रूल. I mean, he would never live a day, he would never go to sleep till the time he did a minimum of 100 blessings, counted 100 blessings. And he always said that जो भी उनकी discoveries हैं, जो भी उन्होंने inventions किए हैं, वो सारे वो बोलते हैं that rest on the shoulders of the giants, जिन लोगों ने मेरे पहले काम किया था, you know, like उनकी वजह से ये आगे बढ़ पाए. So he always used, you know, gratitude to kind of make any discoveries. And we all know, अगर हम इन सब लोगों के बारे में आज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है that, you know, they have done some amazing achievements in their life. And he always spoke only of giving thanks to others in all his interviews, in all his this. He was always, you know, like being grateful to the others. And he you know, like he thanked other people over 100 times a day for the work they had done, because that's what paved the way, isn't it? Even if you're doing it, even if we are live on the YouTube, or even if we are doing anything, it is because someone has taken that, you know, like initiative of starting a YouTube kind of a thing, right? So we really need to be grateful to that person, that, you know, किस तरह से उन्होंने, और this can be viewed all over the globe, no matter what part of the world you are in. Okay, so such beautiful things we did not know. Only came to know about Zoom very recently when COVID happened and all that. तब तक तो हमको पता ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकती है ना? So this is how we have actually, you know, like we have so much to thank all these people for making life so beautiful and easy for us. You know, अलग-अलग लोग, हम अलग-अलग देशों में अभी बैठे हुए हैं, and we are all connected together through that thread, you know, thread of this book that Rhonda Byrne has written, and of course, Dr. Joseph Murphy. So then it talks about Albert Einstein only, that he practiced gratitude every single day of his life. And in return, he received many forms of abundance, because the energy that you're leaving from your life is definitely coming back to you multiplied several times, right? Then Rhonda Byrne has spoken about Sir Isaac Newton, and we all know his amazing scientific discoveries. And he was the one who had said that for every action, there is equal and opposite reaction, which even applies to gratitude. So whatever action you take in gratitude, you know, it will always return back to you. So it's catapulted back to you. So very important for us to be. So we know that how much he contributed to science. Okay, then all the scientists, philosophers, inventors, Nikola Tesla, we know about Tesla engine unhone banaya tha, you know, the fuel-free car. And how he made was only, he actually had locked himself up in the room, you know, to be very grateful and to activate the power of his subconscious mind. Do we know that? I mean, he actually for a year, he had locked himself into the room. He was living in a hotel, okay, not in his house for a while, because he really wanted to connect to himself, to the core of himself, that is to his subconscious mind. And then he discovered the Tesla engine, you know, so that is the power he used himself. So, you know, like all these great people, so they have to. So now it is our turn, because the golden thread of gratitude has to continue, and we want to lead the most beautiful life we can ever think of in every which way, है ना? तो अपने आप को हम इतना खुशियों से, विक्ट्री से, जो विन्स हैं हमारे, वो स्मॉल विन्स थोड़े थोड़े आके वो बहुत बड़े विन्स हो जाएंगे, and we will be a, you know, beautiful life into making. We are already right now, right? So that is, so then Rhonda Byrne talks about herself, my discovery. Hanji Nutan. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude. And what happens?
when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure, I am a grateful person. I say thank you when I receive gift, when someone opens the door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I did not know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly did not make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous, from fair to disastrous, because I never seemed to have enough time for each person. While I would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't leaving, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life, the more miraculous were the results. My life truly became magical. Nutan, you can start Yeah, with yeah. Nutan, you can start with a little up here. You missed a line. Line. I discovered. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do, whatever I wanted, One I second. 1 second. Just the page got missed. Yeah. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed, and the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. Yeah, so this is about Rhonda Byrne's personal, life when she shared that initially जब उनको पता नहीं था gratitude के बारे में तो उनको लगता था कि नहीं मैं हर चीज के लिए थैंक यू तो बोलती हूँ ना जब कोई गिफ्ट देता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ जब कोई मेरे लिए होटल का डोर खोलता है तो मैं उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ जब मुझे कोई चीज ला के देता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ तो उनको ये लगता था कि आई एम अ ग्रेटफुल पर्सन बट दैट्स नॉट ग्रेटिट्यूड राइट आई मीन लाइक ऑफ कोर्स वो कर्टसी से एक तो हम करते हैं बट यहाँ पे when little joys and for little things in your life and you're grateful तो जिस तरह से ये बुक हमको प्रैक्टिस कराएगी all these 28 chapters ये बहुत डेप्थ तक ले जाने वाले हैं और ये पास से भी चीजें एस्केलेट करके लेके आते हैं जिनके लिए हमको थैंक यू बोलना होता है मतलब ऑफ कोर्स एंड धीरे धीरे इट कम्स इनटू आवर फीलिंग्स एंड देन द होल लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग राइट बिकॉज फीलिंग्स आर द फ्यूल इनिशियली मैकेनिकली टेक्निकली हमको करना पड़ता है
तो रोंडा बर्न ने अपना बताया है कि पहले वो किस तरह से उनके हेल्थ में बहुत ज्यादा चैलेंज थे। उन्होंने लिखा है कि सारी लेटेस्ट इलनेसेस उनको होती थी, उनके रिलेशनशिप्स वर बिटवीन स्विंगिंग बिटवीन फेयर टू डिजास्ट्रस, as bad as it can be. So that, and of course money wise she was in a huge debt. We all know that उन पे 2 million का डेट था जब उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई थी. बट आफ्टर दैट ऑफ कोर्स थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज, और जब ग्रैटिट्यूड उनकी जिंदगी में आया उसके बाद then she started to practice gratitude every day, which is the key for us, that we have to practice gratitude every day. So we will do our assignments this time. We will do them diligently, because if we forget to do our assignments, or we become negligent or complacent in doing our assignments, तो हम कुछ certain areas of our life है वहां पे balance नहीं आ पाएगा. As I mentioned, the book is scientifically prepared. Like there is always a reason why chapter number 5 comes before chapter number 6. Okay, फिर chapter number 9 क्यों 9th पे आता है? Why can't you do that on day 1? So there is a reason. It is a stepwise process अपने subconscious को reprogram करने की या life को polish होने के लिए. ठीक है, तो सारे areas of your life should be well balanced, and that is called the real success. Just having the money and getting the awards, that's not real success. Okay, the other things, health भी perfect होनी चाहिए और बाकी चीजें भी perfect होनी चाहिए. That's what. So then of course Rhonda Byrne mentioned that she started practicing gratitude, और उसके बाद उनकी life इतनी अच्छी होती गई. Everything, she enjoyed the best of health, और जो उनके dreams and desires थे, of course we know that she always wanted to buy a big house, mansion by the ocean. She bought it, from that place when 2 million was the debt, to buying a beautiful house very soon, like near the ocean, which has a beautiful drive in, drive out, and the kind of dream that she always held, and then of course, unhone likha tha that she wanted to bring joy to millions of the people. And she's bringing, if all of us are waking up early and we are sitting here and studying about, her contents, and changing our lives. So she's definitely brought a lot of joy in our lives. I mean, goes without saying. Okay, so then of course, like जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी बदली थी, वैसे ये practices करके हम अपनी जिंदगी बदल रहे हैं. बहुत सारी हमने बदल दी है already, और ये करते रहेंगे, है ना? And then she said that I was blissfully happy, the happiest I have ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. So who's changing in these processes? Subconscious mind की reprogramming हो रही है, right? तो हमारा thought process ही change हो रहा है, हमारा attitude life की तरफ change हो रहा है, हमको अपना self talk पे अभी थोड़ा थोड़ा control आता जा रहा है, right? We did not have that kind of a control on the self talk. We always thought negative about it, like कभी कभी मन में चल रहा होता था that why is my job's not going good, my job's not going good, and this happens, I don't feel like going to work, I'm underpaid, so these are the kind of self-talk that is going on. या मेरा business क्यों नहीं चल रहा है, clients क्यों नहीं आ रहे हैं. So इस तरह से अभी तक हमारी self-talk होती थी, तो अभी वो self-talk बदलनी होती, अब बदल रही है already. I mean, like we have, yesterday I had given you that affirmation or your self-talk that keep telling to yourself that all the success and victory that comes to me exceeds my expectations. Like anything, when it comes to me, anything that I receive in abundance, and it always exceeds my expectations. So आप जितना सोचोगे आपको उससे बहुत ज्यादा मिलेगा. तो इस तरह की self talk है. आप अपने work के बारे में of course अपने आप को बोलते जाओ that my work's thriving and flourishing and bringing me lots of money with ease. Then relationships के बारे में, all 100% of my relationships are perfect, and I'm really enjoying the relationships in my life, and my life is opening up to beautiful new relationships, and my circle of friendships is constantly expanding. Okay, so when you talk like this about your relationships, obviously जहाँ पे भी थोड़े errors हैं, जहाँ पे छोटे कमी है, ठीक है, वो सारे ease out होने लग जाएंगे, और आपकी life शुरू होगी, and you will meet beautiful people in your life, have amazing friendships and time of joy with them, right? So this is how, when it is about money, if always we've been thinking about मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मेरे पास कम क्यों है, why? I mean, इसमें Rhonda Byrne ने बोला है that I have money for everything, anything that I want to do. Can't we talk like that to ourselves? That I'm so grateful that I have money for anything and everything that I wish to do.
So this is how we have to keep talking, or keep telling yourself, my income is constantly increasing. So when you simply say this sentence, your self-talk, that my income is constantly increasing, and slowly your subconscious mind will start believing in it, and you will see it happening in reality. Okay, because thoughts become things, ये तो हमको पता ही है. तो हमारे thoughts, हमारे emotions, इनको किस तरह control करना है, it is all about that. So living in gratitude and love is the easiest way to enjoy the kind of life that you have always wanted. Okay. And also changing others' lives around. If you are introducing people to studying the magic book, वो सारी victory जो उनकी जिंदगी में हो रही है, वो वापस आप ही की जिंदगी में आएगी ना? Because it is a simple law. I mean, like, this is how it works. So for every action, there is an equal and opposite reaction. So जो energy आपकी जा रही है, वो वापस आएगी. So I remember that quote from Color Purple, one of my heroes, Oprah Winfrey, when she said in that, she's done only one movie so far, one feature. And when she did that Color Purple, so it was in that movie, she says, that whatever you have done unto me is already done unto you. Like she was talking to someone and telling that person that whatever you have done unto me is already done unto you. That means आपने जो एनर्जी, जो चीज आपने मेरे लिए की है, वो आपकी जिंदगी में ऑलरेडी हो चुका है. मतलब वो ऑलरेडी बस मैनिफेस्ट होने की देर है. That you're going to see that visible very soon, right? And this is how it works. So if you have blessed someone, and if you have said that, that person should be the happiest person, and you will see that आपने उसको जो blessing दी है ना, वो आपकी जिंदगी में वापस आएगी. ठीक है? In a very, very multiplied many times. And this is how the nature of the law works like that only. There is no other way, right? So hence gratitude all the time in everything, and don't give up when you suffer something that you did not want. Okay, it is just the universe's way of communicating something. Ask your subconscious, why has this issue come into your life? Maybe you have not revered that particular thing or relationship, or you have given it a lot of negative energy, right? So we do that, so we get it back. So now we know how to mend our ways, and we know what is the real amazing way of living. Hanji Nutan. Yes, ma'am. Bring the magic into your life. Yeah, bring magic into your life is यहाँ पे एक बुक पड़ी हुई है, और नॉर्मल घर है, घर के विदिन. दैट मीन्स दिस शोज दैट इन योर नॉर्मल रूटीन कहीं पानी पड़ा हुआ है, कहीं खाना पड़ा हुआ है. इट्स अ नॉर्मल किचन, देयर इज अ पैन वी कैन सी ऑन द टेबल इन द इमेज, एंड देयर इज अ बुक. दैट मीन्स विदिन आवर यूजुअल चोर्स ऑफ आवर लाइफ, विदिन द रेगुलर डेज दैट वी लिव, उसमें कैसे हमको जादू लेके आना है. ठीक है? और इस किताब से लाना है, बिकॉज ऑफ कोर्स वी कैन सी दिस बुक हैज लवली इलस्ट्रेशंस. या No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from the thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up
each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. Yeah. So this talks about that how life is going to be from now, or how daily life में magic कैसे लेके आना है, इसके बारे में इतना beautifully explain किया हुआ है. And again, the same quote that the book had started with, no matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. प्रैक्टिस करके देखो, मेरी जिंदगी तो बहुत बदल गई है, मेरा माइंडसेट ही बदल गया है बिल्कुल पूरी तरह से. Like I don't think that अब मैं किसी को look down upon कर सकती हूँ. There was a time when I did have arrogance into me. I'm like a lot of arrogance. I always felt that I was better than the others of some sorts, like all those illusions and all of that. So everything is totally changed, So as a person, we all change. There are little things that happens in life, and we see the joy in small things, I like जब भी मैं किसी होटल में check in करती हूँ, so होटल में घुसने के पहले like front office area में there's a lot of magic tasks that I gave. अब मुझे पता है, thanking all those people for making my stay in the hotel extremely beautiful. So it always happens that way, like हर बार मैं होटल घुसती हूँ तो मैं पहले से ही thank you बोल देती हूँ that my stay in this hotel was the most beautiful stay ever. And I get room upgrades. I get upgrades back and forth, left, right, center. For wherever I am, like for smallest little thing, I see that, someone comes to the aid, and when I'm getting late to board my flight, somebody would, come and help me and take me through the other door, जहाँ से cabin crew जाता है, वहां से security check-in मेरा हो जाता है. तो मुझे ऐसे लगता है कि कितना सब कुछ effortless है, क्योंकि already हमने उनको thank you बोल दिया था पहले for the seamless and effortless and a very smooth and easy check-in. And everything becomes, like छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, मतलब ये तो इवन अदरवाइज जो बाकी के काम होते हैं, छोटे छोटे वेबिनार जो मैं लेती हूँ. So I really already set an intention for everything that, whatever जो webinars के through, whatever I'm sharing, my content has to be right, because कई बार होता है when you are live, you don't remember so many things, जो आपको बतानी बहुत जरूरी होती है. So then I already intend that I am easily remembering everything that I need to share, because live mein you can't need to, I cannot forget anything, because it's also shaping the lives of so many of our students and trainers who are there, the faculties, that everybody's logged in that time. So, whatever content I need to share, मुझे सारा याद रख के बोलना है, तो उसके लिए पहले से ही thank you बोल के, तो पहले नहीं पता था कि इतना effortless होता है. I do so many Facebook lives with ease, and everybody keeps asking me that, what flair do you have in talking? You just, live hota hai and you become a tigress the moment action hota hai camera ka, kahin pe bhi, and you suddenly become a tigress, and this is how. So it is not that. It is all about, that setting up an intention that whatever content I'm sharing is the best they need to know, that will shape their life and their career and give them the knowledge that they were seeking. ओके, सो उस इंटेंट के साथ जब हम करते हैं पहले से ही थैंक यू बोल के, अपने आप वो काम एफर्टलेस हो जाएगा ना, मतलब इस तरह से. सो इट इज लाइक कम्युनिकेशन इज समथिंग, अगर लाइव में हो तो हम सबको वर्क अपॉन करने की जरूरत होती है ना. सो उसके लिए भी तो हम बोलते हैं पहले से ही ग्रेटिट्यूड, दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट माय कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, and I speak the right thing at the right time. Right? So when we constantly keep doing this affirmation, you will not go wrong in the content that you're sharing with others, even if it is a coffee date with your friend. The content that you're sharing, because of your communication, you will speak the right thing at the right time. You will not speak anything that is not right, or anything that can go wrong, or make that relationship sour. So that is the kind of attitude we need to have, like pehle se hi thank you kar do kisi bhi cheez ke liye, and that is how it is. You will change your entire life.
So Rhonda Byrne has written here that इनको खूब सारे letters आते हैं. Of course, secret website पे वहाँ पे एक sharing का column है, उसमें आप पढ़ना. इतने miraculous वहाँ पे experiences लोगों के होते हैं, where they were into terminal illnesses that the doctors gave up on them. You know, and from there they have come back to enjoying their 100% perfect health, and that is how it's been. You know, like so. It's Rhonda Byrne bolti hai, I have seen miracles take place in health where there seem to be no hope, and all in all the other areas. You know, relationships में उन्होंने transformation देखा है. उन्होंने जो total poverty थी, जो you know मैगडीज के बिन से खाना खाते थे उठा के, जो लेफ्ट ओवर फूड जो हम लोग ट्रैश बिन में डाल देते हैं, बिन से खाना उठा के लोग खाते थे और उनके पास चार्टर प्लेन्स हो गए. यू नो मतलब उस तरह की प्रोस्पेरिटी आती है. And then of course, like people who were in depression catapult into joyful and fulfilling lives. So this is the power of gratitude. So it says gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationship. Just be grateful for that person. ठीक है. कई बार नहीं ग्रैटिट्यूड आता है, हमें लगता है उसमें तो सारी बुराई है, मैं क्या ग्रैटिट्यूड उसको ढूंढूं. लेकिन फिर भी आप उनके बारे में, उनके जो बाकी के ट्रेड्स है ना, उनके बाल सुंदर हैं, उनकी आंखें सुंदर हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत ही क्लीन फेस है. यू नो मे बी उनकी बॉडी बहुत अच्छी हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, यू नो मे बी उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो. Maybe he or she might be a great cook. Maybe they are great conversationalists. I mean, they can have great conversations. Maybe communication बहुत अच्छी हो. Maybe आवाज अच्छी हो. Maybe गाना अच्छा गाते हो. Maybe sense of humor बहुत अच्छा हो. ठीक है, ये हो सकता है ना. ठीक है, वो हमारे साथ उनका relationship is not very good. It is very sour. But ये सारी qualities तो उसमें हो सकती है ना. तो उन qualities को ही हम जब देखना शुरू करेंगे, it is up to us what are we choosing from the platter of life. The good or the bad. This is how it is. So this is what it means. And then you will see that person's relationship with you starts to change from the fundamental level. Okay. No matter what state they are in right now. This is what is mentioned here. So gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money to do whatever you want to do. You want to go to whichever country, you will have money. Okay. Because you are in gratitude for money all the time. So then health के मामले में it will bring you more health and that level of happiness beyond what you have ever felt before. So gratitude आपके करियर को accelerate करता रहेगा, आपकी सक्सेस इंक्रीज होगी, आपकी ड्रीम जॉब आपके पास आएगी, या जो ड्रीम बिजनेस आप वेंचर आप शुरू करना चाहते हो उसमें सक्सेस आएगा. एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू बी, डू एंड हैव, gratitude is the way to receive it. Okay, and there is no other way. You can try and see. We have tried and seen already. We don't have to try anymore. We'd rather stick on to gratitude only now. And the magical power of gratitude turns your life into gold. So we are living a life of gold all the time. ठीक है. So let's make gratitude a way of life. मतलब हर चीज में, चाहे किसी ने कुछ भी बोला, कुछ भी किया, कुछ भी कहा, आप अपनी जिंदगी enjoy करो. You don't have to, you have to become a deaf ear. We know the frog story, right? So सारे वो फ्रॉग चल रहे थे तो सब अपनी जान, एक फ्रॉग ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, एक फ्रॉग था जो कांस्टेंट चलता जा रहा था. तो बाद में पता लगा वो फ्रॉग कॉन्स्टेंटली इसलिए चलता जा रहा था उस जार में बिकॉज वो डेफ था, वो बाकी लोगों की बातें नहीं सुन रहा था. ठीक है. सो कभी कभी डेफ ईयर्स करने पड़ते हैं और हैप्पीनेस जोन में रहो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक दैट ग्रैटिट्यूड योर वे ऑफ लाइफ. You will wake up each morning so excited to be alive that, wow, today is another day when I will study these books, I will consume the content and apply it in my life, right? And I will write my blessings. Every day you can set yourself a target कि आप कितनी blessings आज count करना चाहते हो. सुबह जब आप morning walk पे जाते हो या जहाँ पे भी आपको जिम में वर्कआउट करते हो, तो अगर जिम में you're going तो एक एक जो वहाँ पे like जिम का इक्विपमेंट है, ट्रेडमिल है, जो वहाँ पे वाटर फिल्टर लगा हुआ है, वहाँ पे अगर एसी चल रहा है, if there is a fan there, अगर वहाँ पे डम्बेल्स हैं, उनमें इतना ग्रैटिट्यूड भर दो that they will work to make your body so fit, So this is how way of life में यही होता है कि आप जो कर रहे हो, if you are traveling by a metro, तो उस मेट्रो के लिए people who invented that metro, जिन लोगों ने उसके cabins, cubicles बनाए, like जो doors इतने अच्छे से खुलते हैं, जिस track पे वो चल रही है, all the construction workers, who made the metro track, like constantly be in that. नहीं तो अगर हमें ये way of life नहीं बनाएंगे ना, तो human mind बहुत जल्दी चला जाता है towards thinking negative. ओ आज मुझे क्या करना है. This is how we were, right?
हम पहले सो के उठते थे तो सुबह सुबह क्या होता था कि अरे ये गीजर किसने ऑफ कर दिया, मैंने बोला था इतनी बार कि इसको ऑन करना है, ओहो आज ऐसा हो रहा है, अरे द किचन इज सो डर्टी, यू नो लाइक पता नहीं बच्चों ने खाना बाहर ही छोड़ दिया, ऐसे कर लिया, और ये इतना गंदा लग रहा है, आज कितने मच्छर हो रहे हैं, यू नो लाइक दोस आर द काइंड ऑफ थॉट्स वी ऑलवेज हैव इन माइंड। सुबह उठते ही यही सब शुरू हो जाता है कि आज देखो, फिर किसी की लीव आ जाती है कि आज छुट्टी ले ली, आज इतना सारा काम है, वो आज मुझे इतना दूर ट्रैवल करके जाना है, you know, so those kind of things are what cloud our minds. We don't want that anymore. We want to wake up like in a fresh wave of gratitude, finding things from starting from morning, you know, so the moment you set foot on the floor, agar aap bed se uthe ho, sabse pehle thank you, उसके बाद जिस रूम में आप सोए हो उसको बहुत सारा, उसको देख के, जिसको कहते हैं ना ऑब्जर्वर इफेक्ट, जब आप देखते हो तो उस चेंज का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। बहुत अच्छे से देख के एडमायर करके दिल में प्यार भर के आप उसको थैंक यू बोलो, अपने एसी को थैंक यू बोलो जिसकी वजह से आपको इतनी रिलैक्सिंग स्लीप आई है, उस फैन को थैंक यू बोलो, इलेक्ट्रिसिटी को, इमेजिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो कितना मुश्किल होता है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारा थैंक यू। तो आपकी दिन की शुरुआत ही है, पहले 5 minutes आप कैसे बिताते हो, this will decide the course of the day. Okay, so that first 5 minutes of your day when you just opened your eyes, be in extreme gratitude. अगर if you're just lolling around in the bed, आपकी आंख खुल गई है लेकिन अभी उठने में आप थोड़ा सा अपने आप को धक्का मार रहे हो suppose, and you're still in bed but you gotten up, so उस time लेटे लेटे bed में ही just look for the things that you can be grateful for instead of thinking negative things, because बहुत जल्दी दिमाग negative things में आएगा, और सुबह के 2 घंटा हम बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते because वो हमारा जिंदगी का कोर्स डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो सुबह के 2 घंटे में 1 घंटा तो हमारा 1 hour 20 minutes और 1 hour 10 minutes तो हमारी इस बुक रीडिंग में हो जाता है। उसके पहले का जो 30 minutes या 1 hour है when you wake up from the bed, उसमें भी we need to do the assignments because हमको तो already count my blessings लिखना ही होता है। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल अपने दिमाग को ड्रिफ्ट मत होने दो। आई मीन लाइक कैच होल्ड ऑफ योरसेल्फ द मोमेंट यू आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव जोन और थिंकिंग दैट व्हाई इज द रूम डर्टी एंड दिस इज लुकिंग बैड एंड यू नो लाइक व्हाटएवर इट इज, या किसी चीज के बारे में जो कल हुई थी उसके बारे में अगर आप सोच के परेशान हो रहे हो अभी, ठीक है, तो आपका आगे का भी दिन फिर वैसा ही होगा। तो स्पेशली इन द फर्स्ट 2 hours टिल द सनराइज इज नॉट हैपेंड और हमारा ये वाला स्टडी खत्म नहीं हो जाता, हम बिल्कुल भी नेगेटिव जोन में नहीं जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद भी नहीं जाना है वैसे तो हमें, लेकिन फर्स्ट 2 hours में बिल्कुल भी नहीं। एंड दैट इज हाउ वी विल स्टार्ट डिजाइनिंग आवर लाइफ टू द वे वी वांट इट टू बी। So this is what I really love this, you know, from Rhonda Byrne's this thing. As you make gratitude your way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. So just figure out, do we love our life? Yes. We will love our life if we love ourselves. We have to fall in love with ourselves. Then we'll start loving our lives. Everything will seem effortless. अब जो इश्यूज आए हमको वही लगेगा कि ये बहुत एफर्टलेस है, आई एम डेफिनेटली चेंजिंग द एनर्जी ऑफ दिस, है ना। जो भी चीज, सपोज अगर आपके ऑफिस में कोई ब्रेक डाउन हो रहा है, आपके स्टाफ मेंबर्स ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे, यू आर नॉट हैप्पी विद योर वर्क, ओके, स्टार्ट फाइंडिंग ग्रैटिट्यूड एंड से थैंक यू फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स दे हैव डन। यू नो, जो उन्होंने छोटे छोटे काम किए हैं, उन्होंने कोई क्लाइंट अटेंड किया होगा, आपने उनको कहीं भेजा होगा किसी काम के लिए, उन्होंने वो काम किया है, आप उधर एनर्जी डायरेक्ट कर लो। ठीक है, सो एनर्जी चेंज करनी पड़ती है, ट्रांसफॉर्म करनी पड़ती है, एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। तो अभी नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करनी पड़ेगी बाय फाइंडिंग ग्रैटिट्यूड, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। Okay, so transform that energy from negative, you take it to positive and start finding gratitude for the things they have done in the past. Suppose वो आपके 1 साल से एम्प्लॉई है तो उन्होंने कुछ तो बहुत सारा कुछ अच्छा किया ही होगा ना, तभी तो 1 साल से टिके हुए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे ही बुराइयां हो, सो यू विल हैव टू फाइंड सारे वो छोटी छोटी चीजें जो उन्होंने की है, सारे वो वाले काम जो आपने उनको टास्क असाइन किए थे और उन्होंने वो अकम्प्लिश कर लिए हैं, तो उनके लिए थैंक यू, तो आप एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी and you will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges they come, so it's not always vanilla, okay, challenges will keep coming, but you will know how to overcome them and learn from them. Okay, so this is how it is. When I was flying back from Pune to Delhi day before yesterday,
So for a moment, I dipped into the negative zone for a moment when I was there in Pune in the evening. I mean, like when I took a flight. So the first thing I did, मेरे boarding में अभी 25 minutes थे और so the first thing I did is that I opened my, you know, a gratitude journal और मैं अकेली बैठी हुई थी, मेरा phone भी charge हो रहा था उस time. So I wrote 108 blessings and I just wrote thank you and that person's name. That's it. Okay, 108 times, and it was sorted, and I had the most beautiful flight. And you know, the person who was sitting next to me was the most gorgeous lady I've ever seen, and I had like an amazing conversation with her. The food given was rajma rice. You know, I loved eating every bit of it. And then of course, like aake itna smooth tha, you know, my cab driver was so amazing, you know, jis tarah ki wo baatein, very good sense of humor, and I had a lovely journey, you know, till back home. So this is how life becomes, like, you know, agar main wo negative energy carry karti na apne sath, to wo mere har cheez ko color karta, mere flight experience ko color karta, you know, mere cab driver ko color karta. Ho sakta hai mujhe cab milti hi nahi आधा घंटा, you know, so because इस तरह के weather यहाँ पे दिल्ली में on and off थोड़ी बारिश हो रही है तो थोड़ा difficult हो जाता है evenings में. So this is how it is, like everything became so smooth. So that's what it says. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Okay, so you will learn. गलतियां होंगी बट तभी तो सीखेंगे, बिना गलती के कैसे सीखते हैं, कोई तरीका ही नहीं है. जब साइकिल चलाना सीखते हैं कितना बार हम गिरते हैं और वो गिर गिर के इतना अच्छा से साइकिल चलानी आ जाती है. जब हम कार चलाना सीखते हैं तो खूब हमारे डेंट्स लगते हैं गाड़ी में, स्क्रैचेस लगते हैं, गलतियां करते हैं, कभी कभी वॉल पे ही जाके ठोक देते हैं, यू नो, बट उसके बाद धीरे धीरे कितनी प्रैक्टिस, ऑटो पायलट पे चलती है हमारी गाड़ी. व्हेन आई ड्राइव मुझे पता ही नहीं होता कि कब मेरे एक्सीलरेटर और ब्रेक पे पैर जा रहा है, वो ऑटोमेटेड है सब कुछ, है ना, कुछ पता ही नहीं होता. मतलब यू डोंट इवन रियलाइज दैट यू आर इवन ड्राइविंग. एट टाइम्स यू आर टॉकिंग ऑन द फोन एंड यू आर ड्राइविंग, आपको पता ही नहीं होता कि इतने आराम से चल रहे हो. परफेक्शन आ गया ना अब. So that is how it happens, you know, perfection वो आ जाएगा धीरे धीरे, आ ही रहा है, और it's a lifelong process. There's never an end. The fun is in the journey, it's never in the destination. Okay, always remember that. अगर हम ये सोच रहे हैं बस वो आ जाए ना मेरे पास, बस 1 crore I can have in a bank account, तब मैं खुश हो जाऊंगी. No, the fun is always in the journey. Make the journey very, very enjoyable and very fulfilling. Journey में ही तो मजा है, destination तो आएगा ही, it is assured, right? So every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. And this is the kind of beautiful life we craft for ourselves. Okay, so thank you so much, Nutan. We'll be reading only so much today. And thank you for reading so beautifully. Your diction is so good. Thank you, madam. Thank you. So this is Your Life Magical. This we are going to read tomorrow. और सेकेंड बुक जो हम पढ़ते हैं, दैट इज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जो बहुत अलाइंड है टू द बुक मैजिक बुक जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं. ओके, बिकॉज उसमें हमको सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना सिखाया है और ऑटो सजेशन की इंपॉर्टेंस बताई है जितना अभी तक हमने पढ़ा है. एंड कल जो हमने लास्ट किया था, विच वॉज इन दिस चैप्टर, पेज नंबर 73, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है, योर माइंड मूव्स फ्रॉम द थॉट टू द थिंग. दैट मीन्स योर थॉट्स बिकम्स द थिंग्स. ओके, सो अपने थॉट्स को चूज करो. ह्यूमन बींग्स के पास ही कैपेसिटी होती है, बस यही एक लिविंग स्पीशीज है जिनके पास ये पावर होती है टू चूज योर थॉट्स. Okay, so we can immediately let go of the thoughts which are negative, that we don't want to see manifest in our life, because thoughts become things. That is the law of the universe. So ये वाला sentence हमने पढ़ा था last, इसीलिए मैंने इसको green से highlight किया हुआ था. और दूसरा है, unless there is first an image in the mind, it cannot move. जब तक माइंड में वो इमेज फॉर्म नहीं होती ना, जब भी वैसे भी अगर हम थॉट सोचते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली इमेजेस आ जाती है ना. इफ आई थिंक दैट माय चेक इन और यू नो बोर्डिंग विल बी वेरी स्मूथ इन द एयरक्राफ्ट, अपने आप इमेजेस आ जाएंगी ना. व्हाट डज इट मीन टू हैव अ स्मूथ बोर्डिंग, कि मैंने फटाफट चेक इन किया, मेरा सामान क्लियर हो गया, फटाफट मैं गई बोर्डिंग गेट पे, बहुत इजी मेरी क्लियरेंस हो गई, एंड विद इन नो टाइम आई कुड एक्चुअली गो टिल द बोर्डिंग गेट. सो अपने आप को इमेजेस आ जाती है ना दिमाग में.
अगर आप ये भी सोचते हो that suppose that you want to manifest acknowledgement or award, you getting an award for the work that you have done, अगर आपने ये भी सोचा है तो आप इमेजिनेशन में तो ये सोचोगे ना कि कैसे अवार्ड मिल रहा है, कैसे आप खड़े हो, like you're holding that trophy or whatever it is, there's someone else who's giving the award. अपने आप ये ऑटोमेटेड इमेजेस आ जाती है दिमाग में. सो like पहले हमेशा इमेज डेवलप होती है, उसके बाद ही चीजें मूव होती है. दैट इज व्हाट इज देयर इज, फॉर देयर वुड बी नथिंग फॉर इट टू मूव फॉरवर्ड. सो इमेजेस क्या आप होल्ड कर रहे हो, उसके ऊपर भी आपको चॉइस एक्सरसाइज करनी होगी. आई मीन यू नीड टू चूज व्हाट इमेजेस यू हैव इन योर माइंड, नॉट ऑफ लड़ाई झगड़ा एंड ऑल ऑफ दैट. फॉर श्योर वी डोंट वांट दैट. वी डोंट वांट दैट मैं ये नहीं खा सकती, मैं यही खा सकती हूँ, मेरी बॉडी ऐसी है, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा. और बार बार अगर हम सोचेंगे my thighs are very heavy, my hips are very broad, my tummy is popping out, we don't have to hold those images in the head because we don't want to see them, right? जो चीज हम देखना नहीं चाहते वो हम अपने इमेजिनेशन में नहीं लेके आएंगे बिल्कुल भी. इनफैक्ट हम इमेजिनेशन को चूज करेंगे हम. ठीक है, तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की पूरी किताब में यही है that choose your imagination, focus on what you want to see in your life. So we'll just continue. Anyone wants to read? Your prayer से पढ़ना है आपको. I'll read. Yeah, me too. Your prayer, which is your mental act, must be accepted as an image in your mind before the power from your subconscious will play upon it and make it productive. You must reach a point of acceptance in your mind, an unqualified and undisputed state of agreement. This contemplation should be accompanied by a feeling of joy and restfulness in foreseeing the certain accomplishment of your desire. The sound basis for the art and science of true prayer is your knowledge and complete confidence that the movement of your conscious mind will gain a definite response from your subconscious mind, which is one with boundless wisdom and infinite power. By following this procedure, your prayers will be answered. Yeah, so in this, basically, it's just saying that, accept whatever it is that you feel, it should be acceptable to you. जब भी हम प्रेयर करते हैं तो this is the science and art of prayer was the topic. Science, of course, that means it is definitely, with reasons and logics and, सारे जो facts वो होते हैं, उन सब के साथ science होती है. Art होती है the art of imagination and creation, or the art of having the mental images. So they both basically mean the same in a way. There is a scientific evidence of the imageries that we hold in our head and how it actualizes. ये पूरा scientific होता है, ये पूरा process होता है. So इसलिए especially ऐसे time में early morning, late night, or when you're alone sometime during the day, think of all those things that you desire and hold their mental images. अपनी mental movie बोलते हैं ना, कि अपनी mental movie आप play करो बार बार, उसको replay करो, उसको दोबारा replay करो. धीरे धीरे they will become like a permanent tattoo in the subconscious mind. And now your subconscious is reprogrammed. Reprogrammed why? Because earlier it was programmed the other way around. Maybe बचपन से हमने सुना होगा अपने parents को बात करते हुए, या there was some family dispute maybe between your uncles and your father जिसमें पैसा involved था. So वो जो सारे बचपन के जो like patterns हैं हमारे, lack, dispute, unhealthy relationships, वो सारे pattern की तरह हमारे subconscious में थे और वो हमारी जिंदगी में अभी भी रोल प्ले कर रहे हैं. इसीलिए उनकी वजह से our relationships etc are not that great. Okay, now we can reprogram the subconscious mind, which is the whole essence of reading this book. So we are reprogramming the subconscious mind जो पहले से ही प्रोग्राम थे, और reprogram करके हम नए पैटर्न establish कर रहे हैं और अपने आप पुराने वाले डिलीट हो जाते हैं. नए पैटर्न्स को फिर हम इमेजिनेशन के साथ में सॉलिडिफाई कर रहे हैं. ठीक है, इसीलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन कल वाले सेशन में we will study in detail about the visualization and imagination technique, how to do it, what is the right process. Okay, so we will study about that.
So today we've read a little less of this book, but get hold of imagination and imagine things that are acceptable. You know what that by what it means, that some things you will find very doable, very achievable. They should seem achievable to you. वो block या resistance नहीं आना चाहिए. जैसे right now, suppose if you're earning suppose किसी का monthly income है 2.3 lakh, ठीक है? तो अब आप monthly income currently आपकी 2.3 lakhs है, उसको आप 15 lakhs बनाना चाहते हो, ठीक है? तो आपको अभी लगेगा कि नहीं 15 lakhs तो बहुत स्टीप है, कैसे होगा? तो इमिडिएटली वो लॉजिकल माइंड स्टार्ट्स कम इनटू प्ले, यू नो, कि लॉजिकल माइंड चल रहा है कि नहीं ऐसे कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, हाउ विल आई डू इवन इफ आई गेट मल्टीपल जॉब्स, यू नो, हाउ में चले जाते हैं हम लोग, इनएडवर्टेंटली हाउ में चले जाते हैं. सो इट्स ओके. इसका मतलब है आपका 15 lakhs को लेके मेंटल ब्लॉक है, क्योंकि आपको लग रहा है हाउ में बार बार जा रहे हो, इसका मतलब मेंटल ब्लॉक है. आप कम कर लो ना उसको, अमाउंट को. अभी आप 2.3 पे हो, आप उसको 5 lakhs तक ले. 5 आपको बहुत डुएबल लगेगा. अगर 5 नहीं तो आप 2.3 से आप उसको 4 पे ले जाओ. Okay, that has to be acceptable. Now that's acceptable. Okay, someone who's already making 2.3, उसके लिए 4 lakhs per month receive करना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा और वो acceptable होगा. So अभी आप acceptable करो. अब very soon आप बार बार सोच रहे हो कि okay now I have 4 lakhs, तो आप अपना डिजाइन कर रहे हो उसके अराउंड कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे. 1 लाख रुपए आप अपने एफडी में डालोगे, 1 लाख रुपए का आप म्यूचुअल फंड लोगे, 1 लाख रुपए से आप अपना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस चलाओगे, अपनी शॉपिंग करोगे, और बाकी का जो बचेगा उसको आप कहाँ में भी कुछ और किसी और जगह पे इन्वेस्ट करोगे, या you will go you know, like you will keep that money for your health and for your fitness, or maybe to join a gym or something like that. So इस तरह से आप उस 4 lakhs को प्लान करने में लग जाओ कि if I will do this, I will do this, I will keep this money separately for my international travels, इस पैसे से मैं ऐसे करूंगी, इसको मैं इन्वेस्ट करूंगी, ये मैं घर के खर्चे के लिए करूंगी, है ना, इस तरह से. तो अब आप जो आउटकम है आप उसमें ड्वेल कर रहे हो, बिकॉज 4 lakhs आपने सोचा था कि ये मेरा आउटकम है ना. अब आप उसको उसमें उसके अराउंड प्ले कर रहे हो, तो लैक तो चला गया, रेजिस्टेंस भी नहीं है अब, है ना, क्योंकि 4 lakhs आपके लिए बहुत डुएबल सा लग रहा है. हाँ, अगर आप 2.3 से 15 lakhs अगर सोचोगे तो आपको थोड़ा सा वो a little too you know big लगेगा अपने गोल के लिए, और आपका दिमाग में ब्लॉकेजेस आने लग जाएंगे. सो डू समथिंग, ब्लॉकेजेस नहीं आने चाहिए, है ना. आप दैट व्हाटएवर गोल यू आर थिंकिंग हैज टू बी बिलीवेबल टू यू. ओके, तो कोई बात नहीं, टेक स्मॉल स्टेप्स. बहुत जल्दी 4 lakhs अचीव हो जाएगा, और जैसे ही 4 होगा उसको 8 बना देना, है ना. सो इसी तरह से तो कहते हैं ना, इब्राहिम हिक्स सेज दैट ह्यूमन लाइफ आर मेंट फॉर कांस्टेंट एक्सपेंशन. एक्सपेंशन इसी को तो बोलते हैं कि पहले 2.3 लाख रिसीव कर रहे थे, अब आप 4 कर रहे हो. जब 4 के स्पेस में आप पहुंच गए तो आप 8 कर रहे हो, 8 में पहुंच गए तो आप 12 कर रहे हो, 12 के बाद आप 15 कर रहे हो, और 15 के बाद इतनी बार आप कर चुके होगे दैट आपकी रीप्रोग्रामिंग ही अभी ऐसी हो गई है दैट आई कैन अचीव व्हाटएवर आई थिंक, आई एम एन एक्सीलेंट मैनिफेस्टर. आप देखोगे कि वो 15 आपके 50 करना अब मुश्किल नहीं होगा. यू विल फाइंड इट वेरी डुएबल, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण आपके जो मेंटल ब्लॉक्स थे they have all disappeared, right? So this is how we move forward in life, and we constantly keep growing and expanding, and that is the whole essence. So thank you, Meetu, for reading. Thank you so much, and I'm so looking forward to tomorrow's study on the visualization technique. So because that's a very, very powerful technique that can reprogram the mind. So anyone wants to share anything? Thank you, ma'am. Audible. विजय जी, आपकी ट्रिप कैसी थी? Guys, we are not on the YouTube right now. You can share. We will post the video a little later. We've decided that जहाँ पे मैंने stop किया था हम वहीं कट कर देंगे. तो वो वीडियो पोस्ट होगा, बट हम आखिर वाला नहीं लेंगे. आप अपना खुल के शेयर करो जो आपको करना है. इनफैक्ट आई रियली फील, मैं और प्रिया कल बात कर रहे थे तो हम ही सोच रहे थे कि YouTube गोज ग्लोबल, राइट? एनीबॉडी कैन एक्सेस अस नाउ. सो हम हमारी शेयरिंग से मतलब हम उसको अब इस तरह से पैकेज करेंगे अपनी शेयरिंग को कि वो बहुत ज्यादा पर्सनल ना लगे. जैसे अभी तक हम ग्रुप में सपोज अगर बोल देते थे दैट यू नो माय रिलेशनशिप विद माय मॉम इन लॉ वाज नॉट गुड और समथिंग लाइक दैट, है ना. तो अब हम आई हैव चेंज माय रिलेशनशिप्स बोलेंगे, एंड दीज आर द प्रैक्टिसेस आई डिड.
ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं, बिकॉज द होल एसेंस ऑफ अ विक्ट्रीज इज हाउ थ्रू दैट यू कैन टच द लाइफ ऑफ अदर्स, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमारी विक्ट्रीज इसलिए नहीं हो रही कि हमारी सिर्फ जिंदगी बदले, हमारी वजह से किसी और, मतलब हम चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स हैं किसी की जिंदगी में। तो हम अगर अपना रोल ये समझ लें कि हम लाइफ लॉन्ग चैनल रहेंगे ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर समवन एल्स, तो हमारे पास पैसा भी इसलिए आ रहा है ताकि हम इस वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर पाए। हम इसलिए नहीं कि रिच, ऑफ कोर्स हम एंजॉय करेंगे, अपनी प्रोस्पेरिटी कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, बट इट इज टू contribute to the economy, you know, so that you can stay in the best hotels। तो आप सोचो कि कितने लोगों का भी अच्छा हो रहा है ना उसकी वजह से। अब आपके पास प्रोस्पेरिटी आई है, उसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो, आप पॉलिसीज ले रहे हो, आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो, आप ट्रैवल करने के लिए बहुत एग्जॉटिक जगहों पे जा रहे हो, आप बहुत अच्छे, यू नो, लाइक यू आर यूजिंग द बेस्ट मोड ऑफ कन्वेंस, यू आर स्टेइंग इन द बेस्ट ऑफ द होटल्स। तो आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो इतने लोगों की जिंदगी में, है ना। देर आर सो मेनी पीपल जिनको सैलरीज मिल रही होंगी उन सब चीजों से जहां पे आप अपना पैसा डाल रहे हो। लाइक अगर आपने फ्लाइट भी ली है, सपोज यू हैव टेकन गल्फ एयर, तो अगर आपने गल्फ एयर फ्लाइट भी ली है, तो अब गल्फ एयर के जो सारे एम्प्लॉयज हैं उनको हमारे ही तो दिए हुए पैसों से सैलरी मिलती है ना। ऑल ऑफ अस पे द मनी एंड देन ऑफ कोर्स लाइक उनकी भी प्रोस्पेरिटी बढ़ती है। सो वी आर एडिंग टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द अदर्स कॉन्स्टेंटली। Suppose even if it is health, how you can use your health to others' advantage, you know, we have to keep thinking about it. So always think about a bigger goal and a bigger picture, you know, that once this is happening and these are my very clear cut goals, and you know, as you go out to more fancy restaurants to eat and all, so you're also contributing, because बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के restaurants में, pubs में, lounges में नहीं खाने आ पाते। उनकी ड्रीम होती है, उनको मन करता है, लेकिन मे बी इस वक्त वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब सोचो कि उस लाउंज के कितने सारे लोग हैं जिनको हमारे पैसे से सैलरी मिल रही है, हम देते हैं तो उनका और प्रोस्पेरिटी बढ़ती है। तो आपकी प्रोस्पेरिटी बहुत सारे लोगों की प्रोस्पेरिटी ऐड करती है ना। हमारी हेल्थ बहुत सारे लोगों की हेल्थ में, यू नो, और बहुत सारे बाकी एरियाज में भी, बिकॉज हम प्रोडक्टिव हो जाते हैं, हमारी हेल्थ होते अच्छी हो जाती है तो और प्रोडक्टिव होंगे। हमारी क्रिएटिविटी कितने लोगों को हेल्प करती है। सो वी आर ऑल चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स। सो इन आवर ओन वे, जब हम ग्लोबली होते हैं यूट्यूब पे, तो हम अपनी शेयरिंग को बहुत पर्सनलाइज नहीं करके मोर टुवर्ड्स व्हाट टूल्स डिड आई डू टू गेट देयर। सपोज अगर आप ये शेयर कर रहे हो कि मेरा माय बिजनेस हैज बिकम वेरी गुड एंड अर्लियर आई वाज नॉट इवन वर्किंग एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टार्ट माय बिजनेस, एंड व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस, व्हाट आर द टूल्स you have adopted, that आपने क्या क्या किया। आप ग्रेटिट्यूड बोलते थे, जैसे प्रिया ने उस दिन बोला कि वो बच्चे के स्कूल जा रही थी तो उन्होंने बताया था कि मैंने रोड को थैंक यू बोला, मैंने उस व्हीकल को थैंक यू बोला, फिर उसके बाद मैंने स्कूल को थैंक यू बोला, मैंने प्रिंसिपल को थैंक यू बोला रास्ते में, है ना। नहीं तो एंजाइटी होती है कि क्यों सडनली बच्चे के लिए बुला लिया, स्कूल में क्या हो गया, हमेशा से नेगेटिव थॉट आता है ना दिमाग में, बट हमने उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया पहुंचने के पहले ही। हर चीज को थैंक यू बोल के, उस बिल्डिंग को थैंक यू, उस गेट को थैंक यू, जो स्कूल में सारे टीचर्स स्टाफ है उनको थैंक यू, वहां पे सारे जो ग्रेड 3 and 4 वर्कर्स हैं उनको थैंक यू, यू नो, लाइक दैट वे। सो यू आर टोटली इन दैट पॉजिटिव एनर्जी, विद दैट यू एंटर द स्कूल एंड ऑब्वियसली आपको अच्छी न्यूज मिलने वाली है, और अगर कुछ वैसा भी होगा तो वो एक सेकंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। So that is the real way of, you know, like living the life, and that is what is called the way of life, you know. So that is how it is like. So Yes, yes. we can and हाँ जी विजय जी, मैं आपसे पूछ रही थी कैसी रही आपकी जर्मनी की ट्रिप। It was simply successful. Whatever intention I had set in for myself and the goal I visualized, I was able to achieve all the three. अरे वाह, Yeah. wonderful, congratulations. You go with anywhere with the intention or objective and you achieve. That is the way. Yes. And Germany was pleasant, very climate and everything was very good. And this exhibition was happening after 6 years. Usually it happens after 3 years. So Because of COVID? Yeah, because of COVID, 2020 was not there. Okay. Then after 3 years. Okay. Great. Congratulations. You got an opportunity to go there. You Yeah, not shared the pictures of the group with us. I'll do it. I'm grateful to you
Yeah, always missing. Your voice is Tomorrow breaking, onward, Vijayji. yeah, I'm tomorrow onward regularly. Okay, all right. Today I just joined. I have just I wanted to join at 6 o'clock, but I just got up. Okay. Oh, that's Yeah. okay. Oh, you've just come back. Yeah, I have come back. Okay. Great. Very Yeah. good. So happy. May you Thanks. get more and more of these opportunities and Yes. prosper more and more. Yes. And give employment to so many others. You know, they Yeah. will also earn their livelihoods because of you. Yes, yes. That's Yeah. true. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Thank Thank you. Thank you, everybody. Have a brilliant day. Thank Thank- Thank you, Thank you so much, Bye. ma'am, for the amazing Bye. session. Thank you, ma'am. Yeah. Wanted to ask something? What was that? Priya, did Ma'am, you say something? Ma'am, no, I said thank you, ma'am, for the amazing session. Acha, thank you so much. Thank you. Thank Priya. you. Thank you. Have Bye. a good Have a day. beautiful, Bye. brilliant day. Bye. Thank you so